कभी तुमको इंडिया को देख के ये लगता है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को देख के ये लगता है कि इस देश का बहुत ही रैंडम एस डेवलपमेंट चल रहा है? मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, आई सपोज, बट किस डायरेक्शन में? इट्स इट्स अ कंट्री completely devoid of any understanding of what actually matters. I mean, this is just a regular, walking video of Delhi, some random place. And this is a lot of Delhi. A lot of Delhi is just this: traffic, e rickshaws, two wheelers, entire families on two wheelers, e rickshaw. Forget safety. Safety to kahan matter karegi. Like, at a fundamental level, इंडिया में पॉपुलेशन है, इंडिया हैज 1.4 बिलियन पीपल, चाइना हैज अ लॉट ऑफ पीपल। सब मोटा मोटा इंडिया आगे, चाइना थोड़ा पीछे है। बट ये जो बिलियंस ऑफ पीपल इंडिया वाले हैं, अगर इनको देखिए, दे आर पुअर, दे आर ब्रोक। दिस इज अफ्रीकन लेवल्स of wealth that these people have. They don't have money, not really. They have human emotions, human needs भी हैं, but पैसे नहीं है. They don't have that. No job security, no safety in life, nothing. They're just existing. जो कि quite a lot of China doesn't have that. अगर किसी को नहीं समझ आता है इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटली चाइना यूटिलाइज्ड ये जितनी भी भीड़ चल रही है, इंडिया में बस इसी का यूटिलाइजेशन कभी हुआ ही नहीं। बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली द टॉपिक ऑफ द वीडियो। वीडियो का टॉपिक तो तेजस है। ओ तेजस, पॉज। एक तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि इफ यू गो ऑन यूट्यूब, एंड आई एम यूजिंग यूट्यूब फ्रॉम द नेदरलैंड्स, ठीक है, एंड यूट्यूब एंड नेदरलैंड्स, इस पे अगर मैं सिर्फ टाइप करूं तेजस क्रैश दुबई एट दुबई एयर शो, ठीक, एंटर, इट्स all filled with mostly Indian oriented video. Like अब crash का तो दिखा ही नहीं रहे. Forget about the crash. Most of it is just explanation at this point. Especially her. I mean, she is a special one. Palki Sharma, my favorite. ये ऐसी weird किस्म की वो है. She has been able to sell delusion at a scale में तो mass psychosis. It's insane. But basically it their explanation comes down to कि तेजस जो है वो अच्छा है और पायलट बुरा है, और yeah, it's mostly that तेजस अच्छा है, पायलट बुरा है. That's mostly the explanation. Mistake of the pilot, it could be a manufacturing defect. अभी तक मैंने वो सुना तो नहीं है इनके साइड से. Mostly it has been पायलट ने बेवकूफी कर दी. पायलट इज नॉट एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग. मतलब ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने एयर शो में जिस पायलट को भेजा था, ही वाज नॉट अप टू द मार्क. अब ये किसकी गलती है? ये भी तो टेक्निकली इन्हीं की गलती है. इनके चक्कर में एक इंसान की लाइफ चली गई फॉर नो रीजन. आप अपने बेस्ट पायलट को क्यों नहीं भेजे? एंड इवन बियॉन्ड दैट, तेजस का पहले आ चुका था इट इट कि उसका ऑयल लीक कर रहा है, उसके नीचे शॉपिंग बैग्स जो दुबई के थे उन्होंने लगा दिए थे. प्रोबेबली दुबई में शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि यही तो हम इंडियन आर्मी करती है, इंडियन मिलिट्री एंजॉय करती है लाइफ. इट्स अ जॉब्स प्रोग्राम एट दिस पॉइंट. इतनी इनकॉम्पिटेंसी होनी नहीं चाहिए, बट है. तो वहां पे उन्होंने शॉपिंग बैग्स लगा दिए थे. एंड इंडियन साइड सेड, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, इंडियन जो भी इनके स्पोक्स पर्सन है, दे वर सेइंग कि दिस इज प्रोपेगेंडा by the enemies of India, or people, or countries that don't like India. Now they are saying in some of the videos I saw कि the Tejas what's behind Tejas crash in Dubai, like technical failure or something else, like delusions at a mass scale. This is how you do it. You don't let even the international audience know what actually happened. You just are running a brutal narrative. Thank you, New York Post, for actually preserving the video.
Just and Tejas, for all its, you know, whatever it had to offer, it started in 1984. It was a no show from the very beginning. But they still took it there and they still flew it. Why? Oh, people are going to buy this. Why would anybody buy this? It started in 1984. It is outdated from the get-go. शुरुआत से ही outdated. And this is not the only crash that happened. People forgot कि अभी when a few months ago in this year in 2025 the Air India crash. Oh, this is the Delhi blast. There was a blast in Delhi as well. Air India crash. And at Ahmedabad airport in Gujarat, the Ahmedabad to I think London flight that crashed. Remember that? That was also pilot failure. We don't have pilots at good pilots at any level apparently. Damn, that was a big one. This was also a big one. Those are two big crashes in aviation. Two major crashes. And sure, maybe the pilot was at fault. Fine, let's go with that narrative. Where does that lead? Do we have incompetent pilots? Then yes, then when Pakistan says they destroyed so many Indian jets, they probably did because we apparently don't have decent pilots, neither here nor there. But criticism is not allowed anymore, and there is a lot to be said about that. It's the delusional aspect. Like when you have a narrative running 24/7, the cracks appear. And there are major cracks in these narratives. All of them have problems. And there is no answer from any side. Did you get any answer why the Air India crash happened? No. It was pilot's fault. What about Tejas? I mean, this was visible from the get-go. We had videos of oil leaking from Tejas. They were, you could see them. The shopping bags and all of that. Wait, let me show you. Tejas oil leak. Patanjali. This. Oh, they have captions. Look, shopping bags. And this is something only Indians would do because anybody else would have put a bucket. Anybody else would have put a bucket. But because Indians, and you could see this is oil. Look at this. This part. This is not grey. This is dripping in oil. There is something going on with this aircraft, with this particular one. Oh, heavens. It's actually sad. The whole coping. I mean, the mass coping is unreal at this point. Let's go back to Delhi streets. And there is a culture behind this at this point, right? Like, why did Tejas crash? It didn't crash just because of the oil leak. Because then the question becomes, why was there an oil leak? If it was pilot's fault, okay, why wasn't the pilot well trained? All of it point a massive, finger at the entire establishment. Like the entire thing is corrupt. The military is basically a jobs program for people so that they can get in, do a few tours in Jammu where they don't even do much. Jammu in Kashmir, clearly they don't do much. Remember this? Where let wait. I am searching for a terror attack while the Red Delhi Red Fort blast. So this it's insane actually. Pahalgam attack. Oh, for this guy.
Delhi NDTV. Pahalgam, unaware tourist on zipline captures Pahalgam terror. Like there were videos, and it was a whole thing. Obviously there was an whole anti-Muslim or and basically Islamophobia being spread at mass level. All of those genocidal talks that Muslims, we will make you pay. How dare you? The whole thing where dharam pucha jati nahi, which for some reason saying that it's like भाई दलितों पे अटैक्स हो रहे हैं. इट्स अ रियल थिंग. इट हैपेंस एवरी डे. इट हैपेंस. उसको डिनाई कर रहे हैं अब हम लोग क्या? तो जाति पूछ के तो कर ही रहे हो ना. उसने धर्म पूछ के कर दिया. इसमें इतना पर्सनली लेने की क्या बात थी? बट एनीवेज दे टुक इट वेरी पर्सनली, विच उसकी भी अपना एक वो है, कास्ट एंगल है. हैविंग सेड दैट, इट्स देयर इज दिस entire psychosis that is happening in this country, where if you are tuned into the news it breaks your brain, and if you are not tuned into the news your daily life will make force you to turn into the news. It's everywhere. Like we were watching Delhi Street, let's go to uh, Delhi Garbage Mountain Guardian. That's fine. This one, this is a good one. This thing, just look at this. This is also in Delhi. Right now, the AQI in Delhi is around 400 to 500, probably more. And there is no hope of things getting fixed at any scale. अब तो हो ही नहीं सकता. कैसे करोगे? पॉलिसी ही नहीं बन रही है. अब तो इंडिया में कुछ और ही चल रहा है. इंडिया में अब, like there used to be this idea that we need to progress as a nation. Up to we are like we have forgotten progress. We are on a whole different path. एक साइड चल रहा है उसको है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरा साइड इज लाइक just running from the country. जो छोड़ सकता है छोड़ है. Like we have electricians leaving the country. इंडिया में electricians छोड़ के जा रहे हैं. I personally know a lot of them. Plumbers छोड़ के जा रहे हैं. And they are not all of them are not going to America or Australia or Canada. Many of them are just going out. Vietnam में भी चले जाएंगे. They don't care, because anywhere now is becoming better. The only places, wait, the only places that are worse than India or near abouts are these. Google Earth. The constant honking. Yes, I am in India. I also am in Delhi. It's hell. It's hell on earth. I hate this place. Anyways, yes, thank you. So, the countries that are worse than India are very much near India or next to India, I must say. So, that would be Bangladesh, that would be Pakistan. You could argue Myanmar. Yeah, it is a bit worse. Maybe Laos as well. Yeah, like all this region, you can more or less argue that it's pretty effed, including Thailand. I think Thailand is doing quite better than India. However, all of these countries are cleaner than India. Even Pakistan. If you look at the street views of Pakistan, comparatively very clean. But again, it's all comparative. Afghanistan is worse than India. Yeah, Afghanistan is worse. That, and then you just have to go to this part of the globe where Africa is. Here you will find failed republics, straight up failed states. But mostly this place. Yeah, I do realize India is way too big. But, anyways, that's a conversation for another time. Why is this happening? Why, like, there it is one thing कि infrastructure आपका fail कर रहा है. Your infrastructure is falling apart. Valid है भाई. Corruption. But the scale of corruption has reached now, and not just corruption, but also just complete lack of intelligence.
वो तो इस वीडियो में भी दिख रहा है, बट देयर इज अ जेन्युइन लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन एवरी स्ट्राटा ऑफ आवर सोसाइटी नाउ. एंड आई रिमेम्बर जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, बिकॉज आई एम एट एन एज वेयर आई कैन रिमेम्बर बैक इन लाइफ, एंड आई डू रिमेम्बर एन इंडिया बिफोर मोदी. उस समय जब ये गवर्नमेंट आई थी, देयर वाज दिस आइडिया दे हैड where they were very anti-intellectual, and they are still anti-intellectual. They have manufactured a few intellectuals, which some of them I have, I used to not follow, but I knew about them. So they have basically manufactured a few intellectuals. They get them into, they get them connections, they probably get them benefits and all. There is, and these intellectuals have taken the critical thinking of the country from a direction of how to make things better to things are already as good as they could be. India was always a great country. India is a great country, and India, even in future, India is great. किस angle से किसी को नहीं पता. Nobody knows. It's a mystery at this point. इंडिया किस एंगल से ग्रेट है, ये दिल्ली कैपिटल ऑफ द कंट्री का हाल है ये. और ये कोई पुराना वीडियो भी नहीं है, बाय द वे. 2 weeks ago, I mean of 2025. Constant honking anyways, probably mic capture कर ही रहा होगा. Like what do you say to this? Like क्या argument है किसी लेवल पे भी. लोग चाइना का देखते हैं. If you look at Shanghai or Beijing, अगर अभी just wait, right? So let's just open Beijing walk tour, right? uh, let's take, yeah, this is fine cause इसी का इंडिया वाला चल रहा था, तो Beijing of this as well. Look at Beijing. It's clean. It's random, just so well organized. There is order, there is organization. और ये कहाँ से आता है? एट सम लेवल एजुकेशन, जो हमारे वहां तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. वी आर मैन्युफैक्चरिंग अनएजुकेटेड, नॉट अनएजुकेटेड, एजुकेटेड इलिटरेट्स. लाइक जस्ट लुक एट दिस. इंडिया ये अचीव नहीं कर सकता इन इवन 500 years. It will never achieve this. Just this, it is unachievable for this country. Just a clean street, properly organized shops. I mean, यहाँ पे तो you can see कि there is art involved, genuine art, but just organization. एंड ये भी स्ट्रीट वेंडर्स है, जनरल मर्चेंट शॉप है, फूड शॉप है, कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं चल रही यहाँ पे. बट एटलीस्ट देयर इज ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट लुक एट द डिफरेंस. Tejas, brother, Tejas is such a low level thing at this point. कि like, how is this country even functioning becomes the question. Question तो यही है ना कि country चल कैसे रहा है. How is it functioning? Everybody is trying to leave the country, और leave करके भी कर क्या रहे हैं. Indians in Canada. Let's say. Oh, it's mostly how to move to Canada or something, or Indians are causing problems. It's just that, is it? मतलब Indians in Canada. Just let's just search this. Are there are there reasons for hate?
Indians changed Canada. Indians took over Canada. Go back to India. Canadian trucker. Oh my, the memes. ये इंडियन बंदा शायद कनाडा में probably पैदा हुआ एंड ऑल मे बी आई डोंट थिंक probably हो सकता है सेकंड जनरेशन हो आई डोंट नो बट he you know too much of too much of this Indian fatigue in Canada gets worse. Indians feeling unsafe in Canada. Oh भाई साहब rise raises concern over extremism. ये तो मुझे सबसे फनी लगता है बट श्योर अपना फायदा बनता. एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? एवरीबडी नोज द मीम. सबको पता है मीम क्या है कि कनाडा को एक नया इंडिया बना दिया है. वहां से भी न्यूज आती रहती है कि वहां पे भी अपना लगे हुए हैं वहीं कल्चर को फैलाने में. क्योंकि उनके अंदर ये भी आइडिया है ना हमारे लोगों के अंदर कि हमारा कल्चर जो है कहाँ गया. हमारा जो ये वाला कल्चर है. वेट. ओहो. दिस नीड्स टू बी स्प्रेड. ये हमें बाहर लेके भी जाना है. हमको बाहर भी ये चाहिए क्योंकि उनका बनाया हुआ तो उतना. कैनेडियंस ने क्या ही अचीव किया. क्या बना लिया अमेरिकन ने. अभी चाइना का देखा ना. चाइना ने ऐसा क्या स्पेशल कर लिया. ये है स्वाद. दिस इज टेस्ट. ये वो कभी नहीं पकड़ पाएंगे. दे विल नेवर अचीव दिस. यही तो हमको एक्सपोर्ट करना है ना. प्योर केओस. प्योर ह्यूमन के. इमेजिन अगर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. लोग सोचते हैं दैट वुड बी हार्ड. नहीं. नन ऑफ इट इज हार्ड. इंडियंस के अंदर वैसे मतलब इस देश के लोगों के अंदर वैसे भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टाइप का चीज चलता रहता है ना. भारत माता की जय एंड स्टफ. अब ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो पाते हो. कोई किसी लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते. ये देखो बीजेपी. लुक एट दिस. तेजस. तेजस क्या है यार. ऑयल लीक हो रहा था कि वो कुछ फर्क. भाई ऑयल लीक का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. तो मतलब बन ही नहीं रहा है ठीक से. 1984 से 2025 खत्म हो गया. अगर अब नहीं बन पाए इट वोंट बी हैपनिंग एनी टाइम सून. फॉरगेट अबाउट इट. दैट्स नॉट. इट्स अ नो गो. इट वोंट हैपन. बट उसको अबैंडन भी नहीं करेंगे. उस पर पैसा भी खर्च करना है. इतना पैसा पब्लिक का वैसे भी चला गया. रफाल्स जो लिए थे उसमें 21,000 करोड़ का वो था घपला. एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया था. कोई उसका मतलब रिस्पॉन्स या कुछ ना. कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब इट्स नॉट इवन. अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. अब तो अजीब ही हाल चल रहा. अब तो मतलब ये लोग शोबाजी में भी कोई वो नहीं कर रहे हैं. लाइक दे डोंट केयर एट एनी लेवल. इंटरनेशनली जो हो रहा है सो हो रहा है. नो बडी केयर्स. अभी दो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं. एक चाइना रिलेटेड थी जिसमें उन्होंने वो किया कि इंडिया के जो जेट लॉसेस हुए थे अगेंस्ट पाकिस्तान उसको एक्नॉलेज किया अमेरिका ने कि ये हुआ है. दूसरी रिपोर्ट में था वही अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज जिसमें थैंकफुली वो दलित्स को गिनते नहीं है. पता है अगर हम लोग अगर अमेरिका उसमें दलित क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स भी काउंट कर ले तब तो भाई साहब लाइक अजीब लेवल की रिपोर्ट बन जाएगी. द डेवलपमेंट तो अब नहीं हो सकता है इस देश का. दैट्स नॉट पॉसिबल. मतलब हालत देखो. दी ओनली थिंग आई सी हैपनिंग इज जिसके पास जो भी थोड़ा बहुत है या बेच बाच के या किसी तरह मतलब दे लीव द कंट्री. दे जस्ट सेल देयर बिलोंगिंग्स एंड लीव. और कर क्या सकते हो भाई. देयर इज नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट एट एनी लेवल. कैसे इंप्रूव करोगे. इंडिया तो ऑलरेडी बेस्ट है. बेस्ट इंप्रूव नहीं करता. बेस्ट बेस्ट होता है. इंप्रूव चाइना करता है. इंप्रूव जापान करता है. मैंने कमेंट देखा यूट्यूब पे जिसमें एक बंदा किसी को कह रहा था कि यू वेस्टर्नर्स. पता नहीं फॉर सम रीजन उसको ऐसा लग रहा था वेस्टर्न पावर्स के पास सिर्फ F-18 या F-35 हैं कि दे हैव क्रैश्ड मोर देन तेजस. भाई तुम्हारे तेजस इतने बने ही नहीं है. क्रैश कैसे करेंगे. यू हैवंट मैन्युफैक्चर्ड तेजस. क्या दुनिया में 400 तेजस है. आर देयर 400 तेजस फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड. नहीं है. दिस जस्ट पता नहीं व्हाई. लाइक तुम्हारा भी लॉस ही हो रहा है. ऐसा नहीं तुम्हारा फायदा हो रहा है. उसको तो उस किसी और का फन होगा. तुम्हारा तो लॉस ही है यार.
तुम्हारा पायलट भी गया, प्लेन भी गया, क्या फायदा हुआ? हु विंस? हु वन? कोई नहीं। देयर इज नो हेल्पिंग दिस chaos। ये हालत देखो ब्रो। ये तुम्हारे देश का कैपिटल है। हौज काजी चौक चंद्र समथिंग, पता नहीं कहाँ, बट दिल्ली प्रोबेबली। एनीवेज,